Hello students, welcome to Aryan Gurukul Residential College. I am the lecturer in chemistry of Aryan Gurukul College, Mr. Sridhar Panigrahy. This is your first lecture of chemistry. So all of you are curious about what is chemistry. Before going to what is chemistry, I want to ask you one question that why are you want to study chemistry? What is the implementation of chemistry in your day-to-day life? So chemistry is a vast branch of science. It is mainly deal with the study of matter and its properties and the changes undergo matter. Okay. Why? Our first question is why we study chemistry. Chemistry is the science of matter. Therefore, देखो पिले chemistry कथा जदि हम कहबा mainly हमर लाइफ रे डे टू डे लाइफ रे आमे जहाँ भी देखिबा हला सबुतरे केमिस्ट्री अप्लाई होछि जेन गोटे एग्जांपल होछि एबे हमर कोविड-19 टाइम चलछि कोविड-19 रो वैक्सीन बाहर करिया पे ओके मेनली कोन दरकार केमिस्ट्री रो गोटे रोल बहुत अछि कहिना विथ हमर बॉडी भितरे जे कोनोसी भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होछि ओके ऑल रिएक्शन आर अंडर केमिकल प्रोसेस ओके तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस होछि विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द केमिकल प्रोसेसेस we need to kill the COVID-19 virus. This is very difficult work. Okay. Similarly, in our day-to-day life, we use in a lot of flash chemistry. Okay. Mainly, some of the area in which we will use chemistry are agriculture and medicine, then biochemistry. These are the field in which we use chemistry. Mainly in my plus 2 classes, I am not interested in chemistry. Okay, but I think I am very interested in mathematics. But later the period, I want to. I am very curious about chemistry. Why? Because it is a applied field of science. Okay, by the application of chemistry, we can solve different types of problems of our environment and our day-to-day life. Therefore, chemistry is very important. Okay. Then the next question is what is chemistry? Which I have already tell you. It is the science of matter. Okay. So chemistry is the study of matter, the changes it undergoes, and law describe these changes. The laws which describe these changes. Okay. Basically जदि हम कहबा देखो ये जो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को हम तीनटा लेवल रे बुझी परिया गोटे होची कोन लेवल 1 जोटा कि स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज जते सब हमर वर्ल्ड रे मैटर अछि तार प्रॉपर्टीज अछि ऐसा मैटर कहले कोन बुझ तार पूरा सेटा मीनिंग हम बुझबा व्हाट इज मैटर इट इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम mass. Okay, that means this is a marker. It has some weight and it also occupies some space. Therefore, it is a matter. Anything which is surrounding of you, all which you can touch and you can feel it, it is a matter. Okay. For example, in which the pen you have जो पेन ना तुम धरिच है आ कौन ना जो पेपर रे तुम लिखुच से पेपर भी जो टेबुल रे सपोज तुम बसीच से टेबुल भी गोटे टाइप रो कौन मैटर रे हमर कैटेगरी रे आसीबो ओके ऑल थिंग व्हिच इज इन योर सराउंडिंग आर अंडर मैटर देन कौन होती केमिस्ट्री ये जो सब
मैटर अच्छे जमी देख तुम माइंड रे गोटे क्वेश्चन पचारे सपोज तुम जो पेपर धरिच से पेपरटा जो तुम फायर कंटाक्ट आण तो कौन हम से बंद हो बट धरी नहीं तुम पाखे किसी गोटे क्लेर कादुअर किसी टय अच्छे देन तुम किसी फायर कंटाक्ट आनुच सडन से बंद हो होनी रीजन कौन ये सब रीजन जानापी आम कौन करा पड़ो केमिस्ट्री पढ़ा पड़ो ओके सो it is the study of matter and the properties involved in a matter properties for example jemti paper ta burn hela but clay ta burn hela okay so similarly ebe suppose jemti mu कहू out example तमे जदि गोटे clay रो गोटे toy नबो ताको harm करियो then से कोन हो powder form पळे बा break हे जियो but iron नै कि ताको जदि harm करियो कोन हो से sheet form आसियो otherwise white form आसियो जोड़ा हम कौन कहते मेटाल रो malleability और ductility बोली कहते ओके सो these are the some properties of matter and the next level is to understand the microscopic world of the matter ओके माने matter भीतर कौन प्रेजेंट अच्छे जमीन आम पढ़ी 9th 10th क्लास रे कौन ना matter भीतर आम कौन एटम प्रेजेंट अच्छी पुणी एटम भीतर कौन प्रेजेंट अच्छी इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रोटॉन अच्छी न्यूट्रॉन अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर देन एवडा सब कौन एटम भीतर जो पार्टिकल अच्छी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिस ऑल आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल ओके दिस आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बट एमान छाड़ी भी आउरी बहुत गुडा फंडामेंटल पार्टिकल हमरो डिस्कवर हो सारानी मोर देन 24 फंडामेंटल पार्टिकल subatomic particle are already discovered for example pi meson okay just like this more than 24 subatomic particle ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ discover ହେଲାଣି okay then matter तो ଆମେ ଜାଣିଲେ matter କ'ଣ matter को जदि मु क्लासिफाई करियो चाहिबी गोटे वर्ड मु यूज करी କ'ଣ substance okay generally आमे बुझुचंदी कोन सब्सटेंस माने होची कोन मैटर बोली आमे भाबुचंदी एनी सब्सटेंस इज ए मैटर बट इन केमिस्ट्री वी गिव ए स्पेसिफिक डेफिनेशन टू सब्सटेंस द वर्ड सब्सटेंस इज वी कैन से इट इज ए प्योर फॉर्म फॉर एग्जांपल द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैव डेफिनाइट composition and definite properties for example I have take water के कौन प्रेजेंट अच्छी वाटर आम जानते सब कौन वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कौन H2O ओके कौन प्रेजेंट अच्छी ना हाइड्रोजन प्रेजेंट अच्छी और ऑक्सीजन प्रेजेंट अच्छी बट सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जदि मु गोटे चैम्बर रे नेबी गोटे चैम्बर रे नेबी कौन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किछि भी गोटे रेशियो रे नेबी हला मु सेमिति किछि तांको किछि केमिकली तांके कंबाइन करना जस्ट चैम्बर में कोन अछि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट अछि और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट अछि देन एदिरे भीतर डिफरेंस कोन एडी हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि एडी भी हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि आको जे डिफरेंस कोन आमे बुझिया पे ट्राई करिया देखो एडी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि एडी कोन अछि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे लूज देयर आइडेंटिटी हाइड्रोजन रो नेचर कोन इट इज ए फ्यूल इट हेल्प इट इटसेल्फ बर्न से निजे कोन होछि बर्न होछि और एनर्जी प्रोड्यूस करछि व्हेरेज द नेचर ऑफ ऑक्सीजन इज टू हेल्प इन कंब्यूशन रे हेल्प करिया बर्निंग रे हेल्प करिया नेचर होछि का ऑक्सीजन रो बट एमाने केमिकली कंबाइन करिकि वाटर फॉर्मेशन करछंदी जे की हेल्प करछि कोन ना फायर को एक्सटिंग्विश करिया हेल्प करछि ओके निया लिविंग रे हेल्प करछि बट ए जो चैम्बर रे अछि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आको जदि मु ओपन कर देबी आ किसी हीट देली देन कोन हो हाइड्रोजन निजे बर्न होबो ऑक्सीजन बर्निंग रे हेल्प करियो तेडो हम कोन जानले इन वाटर द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन with a fixed ratio of their mass and the mass ratio is the mass of hydrogen is 1 2 atom of hydrogen is present
therefore 2:16, that is equal to 1:8. But in this sample we can take the hydrogen and oxygen in any ratio. Therefore in nature those elements, all the elements and all the compounds are known as substance, or which is also known as pure substance. Okay, mainly we classify matter into two parts. Matter को हम दीटा पार्ट रे क्लासिफाई करछन, गोटे हला कोन प्योर सब्सटेंस और हला मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस is the substance which have a definite composition and definite property. तार गोटे निज गोटे प्रॉपर्टी था, से एलिमेंट रो प्रॉपर्टी को बहन करूनी. ओके, से निज गोटे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करछ. बट मिक्सचर रे जो एलिमेंट प्रेजेंट थाउछ, they retain their identity, they does not lose their identity. But in compound the elements lost their identity. Okay, so mainly so pile matter को मु टू पार्ट रे क्लासिफाई करूची. गोटे हला कोन ना प्योर सब्सटेंस आउडे हला मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस रो डेफिनेशन मु लिखिथिली, जोडा डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड रे लिखा होचे, तुम माने वीडियो पॉज करिके सेटा नोट करियो. ओके, सो प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस. डेफिनेशन मु लिखिथिली जहा कहली प्योर सब्सटेंस अंडर रे हम के लिए आसला. प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट. ओके, प्योर सब्सटेंस मे बी कंपाउंड. Pure substance element भी है, compound भी है. So what is element? It is the substance. It is a form of substance which cannot be further simplified form by chemical means. That means जेमि मु कहबे सपोज धरिले तुम गोटे गोल्ड नेला, गोल्ड नहीं गोटे गोल्ड पीस नेला, गोल्ड पीस को कट कला डिवाइड कर नेला. फाइनली गोटे इन गोटे स्टेज आसियो जोटी कि तमे ताको फर्दर डिवाइड करि परियो. जदि भी ताको फर्दर डिवाइड करिलो ताले कोन हो, से तार प्रॉपर्टी लॉस करियो, ता भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिलीज हो. ओके, सो द स्मॉलेस्ट एटम which is present in the element is known as, the smallest particle which is present in the element is known as atom. ताको एटम बोली कहउछन्ते. एमिति किछि सब्सटेंस अछि जा कि हमें जेते डिवाइड करले भी बा किछि केमिकली प्रोसेस अप्लाई करले भी ताको हमें मोर सिंपल फॉर्म नै परिबे, से सही फॉर्म रे ही रहइबो. ओके, से टाइप रो पार्टिकल को हम कहउछन्ते एलिमेंट बोली कहउछन्ते. Up to date there are 118 elements are already discovered. Between them 92 elements are exist in nature and the other elements are prepared in artificial माने लैब रे जोडा प्रिपेयर करा होछ. 92 टा एलिमेंट हमर नेचर एग्जिस्ट करछि आ बाकी सब एलिमेंट कोन ना लैब रे हमर प्रिपेयर करा होछ. ए जो एलिमेंट्स रहिला, एलिमेंट गुडा को फर्दर हमें क्लासिफाई कर परिया कोन, जेमति हमें क्लासिफाई करछन हमर पीरियोडिक टेबल अछि जोथि हमें देखिछन कोन मेटल अछि, नॉन मेटल अछि, देन मेटालॉइड भी प्रेजेंट अछि. ओके, सो एलिमेंट को हमें फर्दर क्लासिफाई करिया. गोटे हला मेटल, आउडे हला कोन नॉन मेटल, देन आउडे से कोन मेटालॉइड्स. आको हम डिस्कशन करी ठीक पर. फर्स्ट डिस्कशन करछु व्हाट इज कंपाउंड.
कंपाउंड तुम कहली कंपाउंड और मिक्सचर भितर डिफरेंस कौन मेन डिफरेंस है कौन कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स it is the combination of two or more elements in a fixed ratio of their weight. Okay, compound what is two or more elements combine in a fixed ratio re then se kon formation korche compound formation korche then asle kono mixture it is the combination of two or more elements or compounds. Two or more elements or compounds by any ratio. There was no need of a fixed ratio of their mass. By any ratio of their weight. For example, एडी हमर एग्जांपल पड़े से कोन कंपाउंड रे जंदी असले कोन हमर H2O C6 C6H12O6 water glucose then sulfuric acid H2SO4 then phosphoric acid H3PO4 phosphorus acid H3PO3 nitric acid HNO3 okay carbon dioxide CO2 sulfur dioxide carbon monoxide these are the some example of a compound carbon monoxide is the combination of carbon and oxygen by the ratio of 12:16 that is 3:4 similarly all these have a fixed ratio of the different elements in which they combine to form okay so mixture maybe we have taken ଗୋଟେ famous mixture सब यूज करछन कोन चीनी और पानी मिसे बना करी पिउछन ना नहीं so mixture is the combination of water and sugar it is a mixture so again we classify mixture into two parts mixture को हमें further two part रे classify करिया गोटे है कोन homogeneous mixture and heterogeneous mixture orela homogeneous mixture orela heterogeneous mixture so first mu erase kor dosiye what is homogeneous mixture homogeneous mixture जेमि मु एग्जांपल लेली सुगर और वाटर मु फर्स्ट एग्जांपल ले होछि कोन वाटर एंड sugar then water और alcohol okay then our mixture नवा कोन alloy जे कोन से उडे alloy कोन mixture of any two metal is known as alloy then our example में किछि भी उडे जेमि कि air कोन प्रेजेंट अछि मेनली हम कोन प्रेजेंट अछि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट अछि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट अछि carbon dioxide gas present अछि other gases भी present अछि air is a example of homogeneous mixture then asle heterogeneous mixture example देखो example काई होछि example through मु तुम definition टा बुझा चाहूछि ओके so first asle कोन suppose मु होछि water और oil अच्छा water और oil
वाटर और अल्कोहल को जब हम ऐड करिया डिफरेंस कोन ऑब्जर्व होछि तुम कहलो सपोज देखो हम गोटे बीकर नेली एथरे ऐड करली कोन वाटर और अल्कोहल ऐड करली आ गोटे बीकर नेली एथरे म ऐड करली कोन वाटर और ऑयल ऐड करली तो कोन एडी जदि हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करिया वाटर और अल्कोहल बा वाटर और शुगर समान कोन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेकि प्रेजेंट थे से भीतर बट एडी कोन हेतियो ना ऑयल गुडा को ऊपर प्लॉट होते आ वाटर गुडा को जे हेवी ऑयल तो से कोन तळे प्रेजेंट थिबो तो एडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आसेन तो मो डेफिनेशन कोन कहि परिबे डेफिनेशन जदि मु कहया चाहूछी ताले होमोजेनियस मिक्सचर रो डेफिनेशन कोन आसियो द mixture which have uniform composition and identical properties throughout are is known as homogeneous mixture. तो कौन होची होमोजेनियस देखा दिला वर्ड होची इंपोर्टेंट यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एक दिटा वर्ड को नहीं कि तुमको एक्सप्लेन करूची तुमको लागो तो सब बड़े कोन एयर टा छोड़े हेटेरोजेनियस मिक्सचर बट एयर और होमोजेनियस मिक्सचर केमिति ना देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी सपोज देखो तुम दिटा प्लेस रो एयर नेलो दिटा अलग अलग डिफरेंट प्लेस रो एयर नेलो जोट भी तुम एयर नउछनी सेथि कोन थिबो ना 78% नाइट्रोजन रहला हां आ कोन प्रेजेंट रहला ना 21% ऑक्सीजन रहला 21% ऑक्सीजन रहला और बाकी हमर जहां 0.23% समथिंग रोज कोन कार्बन डाइऑक्साइड आ बाकी जहां अन्य गैस गुडा प्रेजेंट होछ सिमिलरली तुम आउट प्लेस रो जहां भी नेलो एयर हैला तो सेथि भी कोन 78% कोन नाइट्रोजन प्रेजेंट रहला और 21% रो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहला अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस किसी अमाउंट तो मेन कंपोजिशन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट प्रेजेंट अछि तो कंपोजिशन है कोन सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कोन ना एडु जो तुम नाइट्रोजन नेछो आर प्रॉपर्टी जहा सेडी भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट अछि तार की प्रॉपर्टी सेम रहयो ना नहीं ओके सो सेति में एयर हो छोटी कोन होमोजेनियस मिक्सचर सिमिलरली heterogeneous mixture definition कोन आसे आर उल्टा आसे the mixture which have a uniform which does not have uniform composition and identical property throughout the solution अच्छा और एक कोड में एग्जांपल होछि जेंति वाटर और शुगर सपोज तुम वाटर और शुगर मिक्सचर लेलो तुम सपोज टॉप नै किछि शुगर और वाटर सॉल्यूशन टेस्ट करो जति की मीठा लागियो बॉटम नै टेस्ट करले भी सेम अमाउंट टेस्ट आछि ना नै बस स्वीटनेस टा सेम रहइबो हैला ना डिफरेंट रहइबो सेम रहइबो तेनो यूनिफॉर्म कंपोजिशन आसला प्रॉपर्टी अच्छा ऊपर नहीं टेस्ट करले स्वीटनेस आसे तो नहीं टेस्ट करले कोन सॉल्टी आसे कि नहीं सेम आसे देयरफॉर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ओके देयरफॉर sugar and water mixture is also a homogeneous mixture mainly how we identify that homogeneous and heterogeneous homo means kono similar hetero means different okay mainly those substances which mix together to form the mixture they all are in same phase in homogeneous mixture in heterogeneous mixture they may be of different form for example I have taken another example soil plus iron powder soil plus iron powder okay it is a heterogeneous mixture it does not have uniform composition and all the mixture have throughout the mixture does not have identical properties and another difference between compound and mixture is we can separate the components of mixture by physical means we can separate the compounds of mixture by physical means for example the mixture of soil and iron can be separated by taking an magnet हमें गोटे मैग्नेट नबा नेकी कोन से जो मिक्सचर जदी हमें
ता कांटेक्ट रे जदि हम आनिबा ताले कोन हो आयरन गुडा सब मैग्नेट को पळे आसीबो सॉइल गुडा सब तळे रहि जो फिजिकल वे रे हम ताको सेपरेट कर पाले बट इट जो अछि वाटर सुगर आको भी हम फिजिकल वे रे सेपरेट कर परिया जस्ट वाटर और सुगर रो सॉल्यूशन नियो हीट कले कोन हो वाटर गुडा वेपर रे कन्वर्ट हो जो सुगर गुडा बॉटम रे रहि जो तो फिजिकल मीन रे हम सेपरेट कर परिया काको मिक्सचर को बट कंपाउंड रे जो कंपोनेंट प्रेजेंट अछंती एलिमेंट्स वो वाटर रो तमे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करियर अछि तो तमे फिजिकल वे रे ताको सेपरेट करि परिबो तमो कोन किछि केमिकल प्रोसेस अप्लाई करियो पड़ियो देन यू कैन सेपरेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर so another point is to separate the components of a mixture you can use physical mean but to separate the components of a compound you need to use chemical process. So this is all about homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. So we can conclude that matter is divided into two parts. One is pure substance, another is a mixture. And pure substance may be an element, it may be a compound. And mixture is also divided into two parts. One is homogeneous mixture, another is a heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, the components are in a single phase or they have uniform composition and identical property. And the opposite behavior is the heterogeneous mixture. So okay student, then एटा थिला हमरो आजिरो क्लास रो समरी नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करिया कोन व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल एटम को जदि हम डिवाइड करछ कोन इलेक्ट्रॉन आसी प्रोटॉन आसी न्यूट्रॉन आसी देन मॉलिक्यूल रो डिफरेंट टाइप्स अछि जेमि कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ताको फर्दर हम क्लासिफाई करिया एंड द मेन पार्ट ऑफ basic concept of chemistry is a mole concept. In the next class we discuss the atom and molecule, then we enter into the main topic which is very important माने mole concept को छाड़ी कि तमे physical chemistry रो कोनोसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करिया होचे डिफिकल्ट. ओके mole concept is the backbone of physical chemistry कहले भी हम चलियो. ओके सो mole concept हमें पूरा briefly discussion करिया. Okay, thank you to all my students.